हेलो बच्चों। जैसा मैंने आपको बोला था कि ये ब्लैक एरोप्लेन पढ़ाने के बाद आपका क्वेश्चन आंसर भी हम देख लेंगे। तो आइए देखते हैं हम किस तरह के प्रश्न इसके इस चैप्टर के अंत में हैं और इनका जवाब हम कैसे देंगे। सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जा रहा है चैप्टर के अंत में वह है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, यानी आपने जो टेक्स्ट पढ़ा, आपने जो कहानी पढ़ी है, यदि वह आपको समझ में आ गई होगी तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आपसे हो जाएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? व्हाई डज द नरेटर टेक इट? यह प्रश्न हमसे यह जानना चाहता है कि इस चैप्टर में रिस्क क्या है और जो कहानीकार है वह यह रिस्क क्यों लेना चाहता है। इसका जवाब हमें क्या देना है? इसका जवाब हम ऐसे दे सकते हैं, व्हाट इज द रिस्क का आंसर होगा द रिस्क इज टू डिसाइड whether to enter into the stormy cloud or not. It was really a very risky game for the pilot to get inside the storm because there was a chance for the pilot to get into a dangerous condition. There was a chance for him to damage the aeroplane together with himself also. The next portion of this question is why does the narrator take it? The narrator had two choices. The first is to go around the stormy cloud or to went back to Paris airport. But the narrator had third thought. He has extreme desire to go to his family and enjoy his breakfast. I think the narrator takes this risk because he wanted to fulfill his desire to take a breakfast at home together with his family members. Okay, now move to second question. Describe the narrator's experiences as he flew the airplane into the storm. ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, इसमें हमें यह बताना है कि नरेटर का क्या अनुभव रहा जब उसने डिकोटा प्लेन को उड़ाया उस स्टॉर्म में, तो उसने क्या सब महसूस किया, उसी को हमें डिस्क्राइब करना है। ध्यानपूर्वक सुने, इसका जवाब कुछ यूं होगा। द नरेटर हैड ए पिक्यूलियर एक्सपीरियंस as he flew the aeroplane into the storm. First time when he started flying his aeroplane, he went towards England 150 kilometers. He flew the aeroplane without any disturbance. But just when he completed 150 kilometers from Paris airport, suddenly he found a large stormy cloud before his plane. It was really a very dangerous condition, and he has to decide very quickly what to do. He decided to enter into it because he wanted to have his breakfast at England. That is why he entered into the stormy cloud. But unluckily, just when he entered into the cloud, he found everything become dark inside the plane. Even some of the instruments which were working before started becoming dead.
For example, his compass stopped working, his radio set stopped working, and these things happened when he entered the stormy cloud. He faced a very dangerous condition, and there was no one who could save his life. Suddenly, he found a mysterious plane flying before his plane. It was really a plane which comes from nowhere, we can say, because that was such a stormy condition which does not allow any plane to fly properly. But luckily, he found a mysterious plane, and the pilot indicated him to follow. And he followed that black aeroplane, and because of that, he reached his airport at England very safely. But when he looked back to the black aeroplane to thank him, to find who was the person who always tried to save his life, he did not find him. When he reached the airport in England and went to talk to the control tower, the lady in the control tower became surprised, and she announced that there is no any trace of other aeroplane except his old Dakota. In this way, we can say the narrator had a peculiar experience in which a mysterious creature, a supernatural element, saved his life, and because of his help, he reached his aeroplane very safely. Now move to the third question. Why does the narrator say, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? इस प्रश्न का हिंदी हो गया, Why does the narrator say? ये कहानीकार ऐसा क्यों कहता है कि उसको एरोप्लेन से बाहर आने में किसी तरह का दुख नहीं था, है ना? ऐसा वह क्यों बोला? इसका जवाब होगा, द नरेटर सेड he landed and was not sorry to walk away from the old Dakota because now his dangerous condition had already passed, and now he reached the aeroplane very safely. So he did not have any danger to come out of the old Dakota. Now move to the fourth question. What made the woman in the control center look at the narrator strangely? जो महिला थी कंट्रोल सेंटर में, उसने इस पायलट को, नरेटर को, कहानीकार को क्यों विचित्र नजरों से देखा? इसका जवाब होगा, द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर looked at the narrator strangely because the narrator was asking her about a black aeroplane who saved his life. The lady or the woman in the control center was surprised because she did not find any other aeroplane on her radar. It was only the narrator's Dakota which landed safely on the aeroplane. There was no any trace of any other aeroplane who fly on that day. It made her very surprised. Let us move to the fifth question.
Who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourself and give reasons for your answer. इसका मतलब हुआ कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि किसने इस नरेटर की मदद की होगी जिसकी वजह से यह सुरक्षित अपने एयरपोर्ट पर उतर सका। जो भी आप बात बताएंगे उसके पीछे आपको कुछ रीजन देना होगा, कुछ थॉट देना होगा, कुछ आर्गुमेंट देना होगा। वी कैन आंसर द फिफ्थ क्वेश्चन। आई थिंक द मिस्टीरियस प्लेन was piloted or was flown by a mysterious creature. We can say it a supernatural element, as we find in mythology. Whenever we find ourselves in a very dangerous condition and we lose the hope of our life, we pray God to save our life. In such a situation, the God sends someone who cannot be perceived by these natural eyes. We can call them a supernatural element who has every power. I think that supernatural creature saved the narrator's life. Now, the second part is how can you say this? We can say this because no any pilot can fly his or her plane in that cloudy, stormy cloud. The first thing, and most of the plane that we find in this world have a particular color that is white, light color. But that aeroplane was black in color, and that aeroplane did not have any light on its wing, which is naturally not found in our world. These are the things which helps us to prove that it is some natural, supernatural element who helped the narrator to reach safely. Let us move to the other part, thinking about the language. Study the sentence given below. They looked like black mountain. Second, inside the cloud everything was suddenly black. Third, in the black clouds near me I saw another aeroplane. And the D, the strange black aeroplane was there. In all the four sentences, we have a particular word repeated in all the sentences, that is black. And in each sentences, we have different meaning of the same word black. ये चारों सेंटेंस में हमारे ब्लैक शब्द आया है और सब में अलग अलग इसके अर्थ है ना। ए और सी में जो ब्लैक शब्द आया है जो वह डार्क कलर को दिखा रहा है, जबकि बी और डी में जो ब्लैक शब्द आया है वह बता रहा है कि बिना रोशनी के, अर्थात बिना किसी लाइट के सिचुएशन जो होता है उसको भी हम ब्लैक कहते हैं ना। जैसे पूरा ब्लैक घोषित कर दिया गया तो शहरों की रोशनी को बंद कर दिया जाता, उस दिन नहीं जलाया जाता, युद्ध के समय में ऐसा होता है। अब यहाँ देखिए नीचे बहुत सारे सिचुएशंस दिए हुए हैं जिसमें भी ब्लैक का प्रयोग हुआ है और हमें प्रयास करना है कि इसका अर्थ क्या होता है जानना है। जैसे पहला है गो एंड हैव ए बाथ, योर हैंड्स एंड फेस आर एब्सोल्युटली ब्लैक। इसमें जो ब्लैक वर्ड आया है वह कौन सा अर्थ दे रहा है? यहाँ यह ब्लैक कलर की बात कर रहा है, मतलब आपके जो हाथ हैं वे काले हैं, डर्टी हो गए हैं
उसको स्नान करके साफ कर लीजिए। यहाँ ब्लैक मीन्स क्या हो गया? ब्लैक इन कलर, इट मीन्स डर्टी। सेकेंड, the taxi driver gave Ratan a black look as he crossed the road when the traffic light was green. इसमें है ब्लैक लुक, जो कि एक फ्रेज है। ब्लैक लुक का मतलब होता है एंग्री लुक। क्रोधित होकर के एक टैक्सी ड्राइवर ने इसको देखा। यहाँ ब्लैक का मतलब क्या हो गया? एंग्री। थर्ड में देखिए, The bombardment of Hiroshima is one of the blackest crime against humanity. यहाँ भी ब्लैकेस्ट है बेटा, तो ब्लैकेस्ट का मतलब हुआ मोस्ट हॉरिबल क्राइम। यहाँ ब्लैक का मतलब क्या हो गया? हॉरिबल। फोर्थ में देखिए, वेरी फ्यू पीपल एंजॉय हेराल्ड पिंटर्स ब्लैक कॉमेडी। यहाँ जो ब्लैक कॉमेडी है, ये कॉमेडी का ही एक भेद है ना, जिसको कहते हैं ब्लैक कॉमेडी। इट इज ए टाइप ऑफ स्टोरी और ड्रामा इन विच द नेचर ऑफ ए कैरेक्टर सीम्स टू बी वेरी क्रूएल। एंड द फिफ्थ, यहाँ तो ब्लैक मतलब हो गया क्रूएल। और फिफ्थ में, समटाइम्स शॉपकीपर्स स्टोर एसेंशियल गुड्स टू क्रिएट फॉल्स स्कैर्सिटी एंड दे सेल दीज इन ब्लैक। ये ब्लैक मार्केटिंग आप लोग सुने होंगे बच्चे। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? इलीगली, जो नियमतः मार्केटिंग के रूल के हिसाब से नहीं है। कभी कभी आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट कर दी जाती है किसी कमोडिटी की। जैसे प्याज की कमी नहीं है मार्केट में, लेकिन बहुत जो व्यापारी होते हैं अपने लाभ के लिए उसे छुपा देते हैं गोडाउन में, ताकि महंगे कीमतों पर उसे बेचा जाए, है ना। उसी को कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग। छठा में है, विलेजर्स हैड बीटन द क्रिमिनल ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत बुरी तरह से पिटाई करना, है ना। तो यहाँ ब्लैक का मतलब कोई कलर नहीं हुआ और ब्लू का मतलब भी कोई कलर नहीं हुआ। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब हो गया बुरी तरह से पिटाई करना। इन सारे सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि एक ही वर्ड है ब्लैक, जिसका अलग अलग तरह से उपयोग किया है और उसके अलग अलग अर्थ निकले। अब आइए हम नीचे देखते हैं। कुछ शब्द हैं जिसके सामने लगा हुआ है फ्लाई, और हर एक शब्द के कुछ अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। आइए जानते हैं, मैच करते हैं क्या होगा। मैच द फ्रेज गिवन अंडर कॉलम ए विद देयर मीनिंग गिवन अंडर कॉलम बी। कॉलम ए में लिखा हुआ है फ्लाई ए फ्लैग, तो इसका मतलब हुआ कि झंडा फहराना। झंडा फहराते ना हम लोग 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, वही है फ्लाई ए फ्लैग, मतलब झंडा फहराना। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? इसका होगा डिस्प्ले ए फ्लैग ऑन ए लॉन्ग पोल। दूसरा है फ्लाई इनटू रेज, इसका मतलब होता है गुस्से में आ जाना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिकम सडनली वेरी एंग्री। और तीसरा है फ्लाई अलोंग। फ्लाई अलोंग का मतलब क्या होता है? मूव क्विकली, अचानक कहीं चल देना, उसको कहते हैं फ्लाई अलोंग। और फोर्थ है फ्लाई हाई। फ्लाई हाई का मतलब होता है अपने जीवन में बहुत तरक्की करना, है ना। कोई अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफल हो जाता है, उसको कहते हैं ही इज फ्लाइंग वेरी हाई। तो उसका हो गया बी सक्सेसफुल। और 5 है फ्लाई द कूप। फ्लाई द कूप का क्या मतलब होता है? एस्केप फ्रॉम ए प्लेस। तो हम लोगों ने पांचों को मिला दिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं
अगले अगले वीडियो में और फिर हम बात करते हैं।